Okay, so we have the first question here. It says, which of the following scientists conducted an experiment to explain the chemical evolution of life? तो chemical evolution of life से related जो experiment किया गया था, options we have Louis Pasteur, J.B. Saldane, S.L. Miller, and A.I. Oparin. Okay, so chemical evolution of life से related जो Urey and Miller ने किया था experiment, ठीक है? तो we'll go with option number 3. Moving on. This is a match the following question number 2. First cellular form of life, invertebrates were formed, first non-cellular form, jawless fish. For database question है, but if we try to do, I remember कि 500 million years ago, first cellular form of life आया था. तो A का 3, okay, no. So invertebrates were formed around 350, okay. So B का 1, okay, we have in 2 options. And jawless fish, वो लोग कब आए थे? That would go for option number 3, 500 million years ago, 350 million years ago. B का 1, D का 3, C का 4 या 2 होगा. तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म से पहले नॉन सेलुलर फॉर्म आया था, तो C का 4 हो जाएगा. एंड विल बी हैविंग ऑप्शन नंबर D एज द आंसर. In this we have to find how many are correct. Okay, so whales, bats, cheetah, and humans share similarities in patterns of bones of folding. Right, first is correct. The diversity of life forms on Earth has been changing over millions of years. Right, millions or billions maybe, but we'll go with millions. About 65 million suddenly disappeared. Okay, this is also correct. A single step large mutation is called speciation, and explained by Herbert Spencer. This is a bit wrong. A single step large mutation is not specifically speciation. Okay, so we'll be having 3 correct. Option number 2. Moving on, next question is the body is we have to find कौन सा इसमें सही है. Okay, the body is supported by a skeleton made up of spicules or spongin fibers with conocytes. This is for the first phylum, that is your porifera. ठीक है, option number 3 and 4 में this is matching. सेकेंड में स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स होते हैं हमारे अर्थवॉर्म जो होते हैं उनमें होते हैं, आई गेस, इफ आई रिकॉल प्लैटीहेल्मिस या प्लैटीहेल्मिस वाले में होते हैं. द बॉडी बियर्स 8 rows and 8 rows of ciliated complex. This is for Retiноphora. So option number D would be the correct answer. Moving on. कितने एनिमल्स जो हैं वार्म ब्लडेड हैं एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट और ओविपेरस कंडीशन रखते हैं. ओके, सो warm blooded may we have the birds and mammals. These two are warm blooded. Okay, so we'll try to figure out कौन से हैं, and oviparous होने चाहिए. तो most of the mammals are not oviparous except one. तो corvus is the correct answer. यहाँ पे oviparous भी है, warm blooded भी है, 4 chambered heart भी है. Struthio is also सही. Macropus, Ornithorhynchus, Valamptera, Pteropus, these are not in the list. Delphinus is also not in the list. Cetacula, Crocodilus is actually having a 4-chambered heart, but it is not a warm-blooded and not oviparous. Okay, so मेरे पास 2 ऑप्शन सही है, इसके अलावा और हो जाएगा. Valamptera नहीं होगा, Macropus नहीं होगा, Ornithorhynchus नहीं होगा, टेरोपस नहीं होगा, डेल्फिनस नहीं होगा. सिटैकुला इज ऑल्सो अ बर्ड, तो वो भी सही होगा. ठीक है, एंड कॉर्वस, स्ट्यूथियो, सिटैकुला, these 3 are going correct, and then Ornithorhynchus also. Okay, so we are having 4 correct in this. Moving on, which of the following can be obtained from the amniotic fluid? Okay, so cells of the fetus skin, mesenchymal pluripotent cells, hematopoietic stem cells, all of the above. So the most appropriate should be cells of the fetus skin, but mesenchymal hematopoietic stem cells, these can also be obtained as far as I can remember. So option D should be the answer for this. The following is true regarding contraceptive type and example.
Barry method, condom diaphragm and Provera, oral contraceptive pill, okay, hormone releasing IUD, LNG20, progesterone, multi-load. Multi-load is not a hormone releasing. Implants, Norplant, Implanon, and Depo-Provera. So a bit out of NCERT, but if we have to go with one correct option, 2 and 3 are a bit. Saheli is correct. Mala D is also correct. Tracular, I don't have much idea of. Hormone releasing IUD, LNG20 is correct. This option is wrong because multi-load is not hormone releasing. Implants, Norplant, Implanon, Depo-Provera. This seems to be the correct answer. Okay. Which of the following is correct match? I'll be a bit quick from here. Hisardale, new breed of cattle developed by crossbreeding. Livestock includes cattle, buffaloes, and all. Mule shows inbreeding depression developed by outbreeding. Okay, all of the above. Third is obviously not a correct option क्योंकि outbreeding से inbreeding depression नहीं होता है. ठीक है. Livestock is going to include cattle, buffaloes, sheep, pigs, goats. I think this is correct. Crossbreeding से Sardale is from crossbreeding. Well, okay, I'll skip this question for now. We'll see later. The following structures are paired, except paired कौन सा नहीं होता है? तो urethra जो है वो single होता है. Prostate gland is also one. Okay, so this should be the correct answer. Read the following statement. Menstrual cycle in females related and correct कौन सा वो choose करना. It is a reproductive cycle in all mammalian females. The menstrual flow results due to breakdown of myometrium. Okay, myometrium नहीं होता है. So B is incorrect. So B option 2 में है, ये गलत हो जाएगा. A is correct. It is a reproductive cycle. तो A जिसमें जिसमें नहीं है, that those answers, those options would go A, C and D होगा. क्योंकि option number C और D में, option 3 और 4 में A नहीं है. We'll see other options also. Graphene follicle, endometrium, uterus regenerate simultaneously during follicle phase. Okay, this is correct. Corpus luteum secretes a large amount of estrogen. Okay. Corpus luteum does secrete estrogen, but endometrium के लिए progesterone is more essential. But this can be correct, right? Because estrogen is also important, but progesterone is more important. The embedding of X in the Y of fetus is called implantation. Obviously, embedding होगा blastocyst का in the endometrium. The DAS process is crucial to the success of the breeding program. Breeding program is crucial. कौन सा crucial है? Release, testing, selection, hybridization. Hybridization is very important. Read the following matches and mark the correct option. Antigen binding site on antibody contains the variable region of heavy chain only. No. अगर हम लोग antibody का structure देखें तो this is kind of like this. तो ये heavy chain, ये होता है antigen binding site, heavy chain भी होता है इसमें and light chain भी होता है इसमें. Okay. तो option number 1 is incorrect. तो 1 and 3 are correct. No. 1 4 are correct. मतलब कि first and fourth option are not going to be the correct answers. We'll see option number statement number 3, graft rejection due to cell mediated. Okay, this is correct. So option number 3 is correct. So this should be the correct answer. Choose the odd one with respect to XC2 conservation strategies. Okay, XC2 is like out of their natural habitat. So XC2 may will be having wildlife safari parks, zoological park. Okay, sorry, zoological park, zoos. जो कहीं भी लाइक उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म को आउट ऑफ हैबिटेट रख सकते हैं यहाँ पे. ओके, XC2. Let me just see. Botanical garden. Okay, botanical garden is also XC2. Wildlife safari park is also XC2. Okay, so we have to choose the odd one. So hotspots would be odd because it's not XC2. Okay. Which of the following is not correct about the alkaloid obtained from the papaver somniferum plant? Opioid drug होता है mind specific party. Okay, this is correct. Heroin is chemically diacetyl morphine. This is also correct. Snorting and injection. Okay, CNS stimulant नहीं होता है. This is CNS depressant. Okay. Now more conservative and scientific sound estimate made by Robert May, 1.7 million. 1.7 million. Yeah. 1.7 or 1.5, I do not remember the exact data, but 1.7 it was, I guess. Of the following,
and dash represents the largest man-made ecosystem. Man-made ecosystem, largest one. Okay, garden, aquarium, agricultural land, all are man-made. Largest agricultural land can be larger. It actually can be pretty large. Okay. India covers the world area 2.4%, okay, and 8.1% of diversity. So which of those structures is not associated with coastal layer of the small intestine? Not associated. Villi and microvilli, okay, they are associated. Chief cells are present in stomach, not intestine, okay. If 10,000 joule of energy is present at T1 level, then what is energy present at T2 level? Okay, so 10% of energy is transferred. So 10% of 10,000 would be 1,000 joule only, right? In front of the lens, the aperture surrounding the iris is called, iris is surrounded by pupil. The human red blood cells are about dash in diameter 7 micrometers. Straightforward question. Is the following hormone helps in water retaining in body? ADH, water retention. Antidiuretic hormone. Diuresis is कि यूरिन का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, more water is excreted through urine, तो antidiuretic hormone is helpful in retaining water in the body. The genetically inactive and highly condensed region with a tightly packed DNA which receives dark stain. Okay, genetically inactive receiving dark stain, heterochromatin. If the total amount of adenine and thymine is 60%, so amount of guanine क्या होगा? So adenine plus thymine is equal to 60%. Okay, तो बचा कितना? 40% बचा. Guanine and cytosine is equal to 40% and both are equal. So each 20%. Okay. Read the following statement. Appropriate option. Okay. The action potential generated by SN node stimulates both ventricles to undergo simultaneous contraction. ओके क्योंकि ऐसे नोट से तो जा रहा है, बट ऐसे नोट से एवी नोट जाके फिर वो ट्रांसमिट होता है, बट विल सी. द हार्ड साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ बोथ सेमी लूनर वॉल. सो वी हैव टू साउंड्स, लब एंड डब. दिस इज द फर्स्ट हार्ड साउंड एंड ये जो होता है एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स के क्लोजर की वजह से होता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 मतलब स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट. द QRS complex in ECG represents a depolation of the ventricles. This is correct. QRS is depolation of ventricles. So B and C are correct. All correct. There is no option like that. Because A is actually, sorry, B is actually incorrect. Sorry, B is actually incorrect. So C is correct. C is correct. B is incorrect. C is correct. B is incorrect. This is the option. A is also incorrect because directly SA node से stimulate नहीं करता है ventricle. It goes to the AV node also. Okay. The following is reducing and non-reactive. Reducing sugar and non-reactive sugar. Sucrose is not reducing, it is a non-reducing sugar. Galactose is a reducing sugar, but non-reactive, not specifically knowing कि non-reactive है कि नहीं. I think reactive होगा. Gluconic acid also reacts. Methyl galactoside seems to be the most obvious answer. We'll go with this. Which one of the following is incorrect statement? The site of actual diffusion of gases between blood and atmospheric air is called exchange part of lung. सही है. Inspiration is initiated by contraction of diaphragm. No. Inspiration is initiated by, no, internal intercostal muscles are involved only in forceful inspiration, not in normal inspiration. Okay. Incorrect bola gaya. Okay, so this is incorrect. Which of the following lipids is found in the cell membrane? Lecithin is found in the cell membrane. Okay. DNA. What will be the amount of DNA in the meiotic two products if DNA is 20 picogram in the meiotic myocyte at G2 stage? So G2 पे 20 picogram DNA present है, तो meiosis 2 के बाद कितना बचेगा? Okay, so this is the question. 20 picogram है, तो meiosis 2 के बाद we know कि meiosis 2 के बाद 20 picogram जो होता है वो चार पार्ट में, this is like 4C, 4C, ठीक है. 4C 4N स्टेट है और meiosis 2 के बाद जो स्टेट होता है that is your CN state. Okay, so 20 picogram is 4C, so C would be 5 picogram. Which of the following is incorrect regarding the erythroblastosis fetalis condition in a pregnant woman? Okay. Special case RH incompatibility or mismatching. सही है, incorrect बोल रहा था but destruction of RH positive fetal RBC. This is also correct. Specific antibodies against RH antigens are formed inside fetal blood. No, mother से related होता है. मदर से रिलेटेड होता है. मदर के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड.
Which of the following parts the plant is used as commercial wood? Commercial wood. Wood is the outer part of the plant. Okay, part of the plant. Sorry, outer part of the plant is cork. Inner part, this xylem part, secondary xylem part is actually the wood part. Okay. In an animal cell, cytokinesis involves the separation of sister chromatids, the appearance of a furrow in the plasma membrane. या एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ होता है जो साइटोकाइनेसिस होता है, दैट इज सेंट्रीपीटल. ओके, तो अपीयरेंस ऑफ फरो होगा इसमें. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम्स आर कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन? ओके, कॉर्क कैम्बियम ऑफ अ डाइकॉट स्टेम, कंप्लीटली सेकेंडरी पूछ रहा है. वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ अ डाइकॉट स्टेम, कॉर्क कैम्बियम ऑफ अ डाइकॉट रूट, वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ अ डाइकॉट रूट. कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, स्टेम एंड रूट. I do not actually recall exactly. So last में देखते हैं इसको. I'm saving it for review. Generation of second messengers is not possible in which of the following given set of hormones? सेकेंड मैसेंजर्स नहीं पॉसिबल है. सेकेंड मैसेंजर्स उनमें उन जरूरत होता है जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सके. ठीक है, तो मेम्ब्रेन को जो क्रॉस कर सकता है उसमें सेकेंड मैसेंजर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा. और मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाला लिपिड हॉर्मोन्स होता है, दैट आर एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन कैन आल्सो क्रॉस द मेम्ब्रेन. सो मोस्ट करेक्ट आंसर वुड बी या एपिनेफ्रिन इज आल्सो अमीनो एसिड जो कि क्रॉस कर सकता है. FSHLH क्रॉस करता है, ऑक्सीटोसिन क्रॉस करता है, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन. ओके, सक्सेशन प्रोसीड्स फ्रॉम जेरिक टू मीजिक. जेरिक टू मीजिक तो मीजिक में होता है, चाहे जेरिक से स्टार्ट हो, मीजिक में ही आके खत्म होता है सक्सेशन. ओके, चाहे वो जेरिक से स्टार्ट हो, चाहे वो हाइड्रिक से स्टार्ट हो. तो हाइड्रिक टू म्यूजिक एंड जेरिक टू म्यूजिक दोनों सही है. मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, अरेंज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूट वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम. ओके, region of elongation, root hair, region of maturation, region of mesomatic activity, root cap. root cap जो है bottom most part होता है, तो and root hair जो होता है इस region में होता है. ठीक है, तो root cap should be the last one. तो ऑप्शन 1 एंड 2 में वो चीज है. रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन बीच का होता है. रीजन ऑफ मैचुरेशन, दिस फर्स्ट इज द रीजन ऑफ मैचुरेशन. सो दिस इज द आंसर, रीजन ऑफ मैचुरेशन. उसी में रूट हेयर भी होता है. देन रीजन ऑफ, दिस इज द रीजन ऑफ मैचुरेशन, दिस इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन, एंड दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक activity. Okay, which of the following is an examples of plant with palmately compound leaves? Palmately compound leaves, I think silk cotton. The mango has a fleshy edible dash and a stony hard dash. Okay, so mesocarp is edible in mango and endocarp is hard. Which of the following estivations involve non-uniform overlapping of petals? Non-uniform overlapping of petals. कैसे भी ट्विस्टेड है वो, लेकिन ट्विस्टेड में यूनिफॉर्म होता है. इंडिकेट विल बी द आंसर. फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स. ओके, PBG. P being गुलमोहर एंड केशिया. ठीक है, these belong to one category, so mustard should be the answer according to. ठीक है, साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस जो होता है हैजार्डस होता है. ठीक है, which of the following matches is not true for the hormone and their function? Thyroxine, water electrolyte balance, not exactly. Cortisol stimulate the formation of erythrocytes. Melatonin influences pigmentation and menstrual cycle. This is correct. All of the following are correctly matched. No, incorrect पूछ रहा था. Thyroxine, maintenance of water and electrolyte balance. This is mainly for the BMR regulation. Okay, cortisol does stimulate erythrocytes. Cortisol is it increases the amount of RBC. So we can, the first option is not so much correct. So we can go with the first option. Which of the following structures in humans is an important neuroendocrine link to control and coordinate the activities of hormones? Okay, hypothalamus. Hypothalamus is the neuroendocrine link. It is the grandmaster gland. Read the following statements and select the appropriate option. The pliability and flexibility in cartilage. Okay, chondroitin sulfate की वजह से chondroitin sulfate होता है cartilage में. कौन कौन सा correct incorrect है वो देखते हैं हम लोग को. The hardness of bone reduces calcium phosphate and collagen fibers with osine protein. This is correct. The total number of bicephalic ribs in humans are 12 pairs.
Bicephalic. All ribs are attached to vertebra. So any rib that is getting attached to vertebra, it can be bicephalic. It is bicephalic. Sutures between these, the sutures are not cartilaginous. These are fibrous. Okay, the 4 is incorrect. So we have 4 incorrect in which of the following? Only in option 1. Okay. Okay. 1, 2, and 3 are correct. This can also be a correct one. This is a correct one. 4 is incorrect. All 3 are correct, right? Select the correct option with respect to thermal pollution. Speeds up degradation of organic material. Okay. This is a death of temperature sensitive organisms. Okay. Increases the rate of metabolism and microbial activity. This is correct. Thermal pollution. Okay. Enhance the growth of aquatic life without harming them. No, it harms the indigenous species. Okay. And it does lead to the death of temperature sensitive organisms. Increases the rate of metabolism, that is correct, but we are talking about pollution, so mainly negative impact देखेंगे. Find odd one out with respect to ecto or endo parasitism. Quisqueta, Hirudinaria, Anopheles, Plasmodium Hirudinaria is leech. Plasmodium is endoparasite. Anopheles is obviously Anopheles is mosquito, obviously ectoparasite. Hirudinaria ectoparasite, Quisqueta ectoparasite, Plasmodium endo. The pleiotropic character represents that quality of gene in which it can pleiotropism be dominant over recessive genes, be capable of representing more than one form, regulate more than one phenotypic characters. Okay. Which of the following properties is not associated with muscles of human? Exhibit both contractility and extensibility, both excitability and elasticity, endodermal in origin. No, muscles are mesodermal in origin. Okay. The types of flowers which produce seeds, even in the absence of pollinators, are called. That can produce seeds even in the absence of pollinators. खुद अगर it is bisexual, then it would not require कि pollinators आके pollinate करें. Okay. Special cellular thickenings are observed at the microphylar end of the synergies. Okay. सेलुलर थिंकिंग जो होता है उनको बोलते हैं हम लोग फिलिफॉर्म अपैरेटस. यहीं से आंसर आ गया. गाइडेंस ऑफ पॉलिनेटिव इंट्रोसिनर्जी में हेल्प करता है. इट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. इनमें से हम लोग को पता करना है कि इनकरेक्ट कौन कौन सा है. ठीक है. मल्टीपोलर न्यूरॉन एक एक्सॉन होगा और काफी सारे डेंड्राइट्स होंगे. ठीक है. दिस इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. तो नेक्स्ट वन इज रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम पोटेशियम पंप जो है 3 सोडियम को अंदर 2 पोटेशियम को बाहर करता है. ऐसा नहीं है एक्चुअली में. मतलब एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसे सही है कि गलत है. 3 सोडियम को अंदर करता है एंड 2 पोटेशियम को बाहर करता है. हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रेस्टिंग स्टेट में अंदर नेगेटिव होता है इसको पॉजिटिव करते हैं. ओके, सो दिस इज करेक्ट. दिस इज आल्सो करेक्ट. ओके. तो मिड ब्रेन एंड हेड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम including the no cerebellum is not in the brain stem. So third option would be incorrect. Third statement, the pons of the hindbrain is directly connected to the spinal cord to control respiration. Pons is actually involved in respiratory control. So only one statement is incorrect. That is option number, sorry, statement number 3, and hence option number 3 would be the answer. Okay. Monoecious plants like castor and maize, autogamy and allogamy are not prevented. मोनोसियस है. मोनोसियस प्लांट्स में दोनों चीजें प्रिवेंट हो जाती हैं, बट लेट मी सी. ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड. ओके. जिटिनोगैमी इज प्रिवेंटेड. एलोगैमी इज प्रिवेंटेड. जिटिनोगैमी मोनोसियस प्लांट है, बट दूसरे फ्लावर पे तो लाइक पॉलिनेशन हो सकता है एज फार एज आई कैन रिमेम्बर. So I guess the Jitteronomy is not prevented. Should be the answer for this maybe. Some seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. While in some, okay, respective side type. तो कुछ में एंडोस्पर्म रिटेन होता है, कुछ में एंडोस्पर्म रिटेन नहीं होता है. ठीक है. तो रिटेन्ड वाले में क्या क्या आ जाएगा? डाइकॉट्स में एक्चुअली रिटेन नहीं होता है. तो वी कैन सी कि कौन डाइकॉट है यहाँ से, थोड़ा आइडिया लग जाएगा हम लोग को. ब्लैक पेपर, कैस्टर, पीस, डाइकॉट उसमें रिटेन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ग्राउंडनट में रिटेन होता है, तो रिटेन वाले में ग्राउंडनट वुड बी सही. ब्लैक पेपर इज ऑल्सो देयर. बार्ले इज ऑल्सो देयर.
monocot and dicot. Barley is, I guess, monocot. So monocot and dicot. Option number 4 सही होना चाहिए. Vernalization is commonly seen in plants like biennial plants में दिखता है हमको generally. Carrot होता है, सही है. Which of the following structures of human brain is used to connect to its hemisphere? Corpus callosum. A dormancy of seed is broken by ethylene, whereas it is induced by induce कौन करता है? Okay. Induce करेगा ABA. Dormancy ABA. FCC. अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक में एक्सपोनेंशियल भागते हैं, अरिथमेटिक में हम लोग लाइक सिंपल मैथ्स में भागते हैं. तो एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल प्लस आर टी होना चाहिए. तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी है, राइट. अ फीमेल कॉकरोच कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ मेल कॉकरोच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ऑल. तो बोट shaped seventh sternum forming broad paws is correct. M style नहीं होता. M style is present in male. Anal cerci and abdominal segment. So I think this is present in both. So ये होना चाहिए. This is the following microorganism is involved in last step of biogas production. Last step of biogas production. Okay. Methanobacterium. Select the odd one with respect to biofertilizers. Odd one कौन है? Viruses नहीं use होते हैं obviously. The tissue whose cells acts like diffusion boundary. जो सबसे पतले होंगे, simple squamous. Plasmids are extra chromosomal genetic material found in plasmids are extra chromosomal genetic material bacteria. The specific DNA sequence recognized by EcoR1 GAATTC 5 से 3. This is the correct one. Not true regarding transgenic animals. Okay, not true. Option 1 is true. Safety testing help करते हैं. Study of growth factors we can do. Protein alpha 1 antitrypsin is also true. C is actually not an incorrect statement, but transgenic animal से इसका relation exactly नहीं है. ठीक है, emphysema में alpha 1 antitrypsin देते हैं, but this is not exactly related to transgenic animals. Okay, transgenic और रोजी अल्फा लैक्टोल्बुमिन प्रोड्यूस करती थी 2.7 ग्राम पर 100 ml, I guess. तो वो तो सही है. So this should be the answer. और transformation are made up of gold और tungsten. Okay. Choose the mechanism that is used in tobacco plants. RA interference होता है. The interaction between cuckoo and crow, brood parasitism. In lack of operon, the structural genes are switched off when? Okay. कब switch off होता है? Repressor binds to operator. Repressor bind to promoter. Operator is a thing. Which one of the following also acts as catalyst in bacterial cell? Bacterial cell में catalyst 28 is rRNA. That is your ribozyme. It helps in ribozyme. Yeah. Which one of the following amino acid does not show degeneracy? Degeneracy tryptophan. क्योंकि tryptophan जो होता है उसका सिर्फ एक ही कोडॉन होता है. How many type of gametes can be produced by diploid organism if it is heterozygous for 3 loci? So जितना भी loci के लिए heterozygous होगा, types of gamete के लिए हम लोग to the power n कर देते हैं बस. तो 3 to the power types of gamete है ना, sorry, to the power 2 कर देते हैं. जो भी n होता है to the power 2 कर देते हैं. Let me recall. या फिर we can see heterozygous में अगर हम लोग ऐसा बना दें AA BB CC. ठीक है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला एग्जैक्टली, बट गैमेट्स बना के देख सकते हैं हम लोग टाइप्स में क्या क्या बनेगा. तो ए के हिसाब से वी कैन हैव ए बी सी ए बी सी ए बी सी. ओके, एंड ए बी सी 4 एंड द सेम गोज अगर हम बी ले लेंगे तो 8 होगा आंसर. ठीक है, दीज 4 आर देयर. और अगर मान लो स्मॉल ए ले लेंगे तो स्मॉल ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी C, small a, small b, C, small a, capital B, small c. Okay. So the formula was 2 to the power n. N is the number of heterozygous things. Okay, this is the formula. Now I can say a cross between F1 hybrid and its homozygous recessive parent is called. F1 hybrid और homozygous recessive parent के बीच में जो क्रॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. ठीक है, बैक क्रॉस में इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि होमोजाइगस रिसेसिव ही हो. तो बैक क्रॉस इज सही कि पेरेंट के साथ करते हैं, बट ये स्पेसिफाई कर दिया तो टेस्ट क्रॉस शुड बी द आंसर. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन ए का 4. ओके, बी का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस दीज आर रिलेटेड टू योर बेसोफिल्स, तो बी का 3. ओके, सी मेगा कैरियोसाइट्स
platelets related to thrombocyte, C का 1. Okay, so this should be the answer, right? Incorrect. So symplastic movement may be aided. This is correct. Cytoplasmic streaming can be observed in the cells of Hydra leaf. This is also correct. Over long distances, substance no. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होता है ये, सेल के विद इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकता है. सी इज करेक्ट. Symplastic movement, okay, this is also correct. So C is incorrect. So option C should be the answer. Which is the recombination percentage between gene Y and W in Drosophila? Y and W, there is chart in NCERT. Y and W recombination percentage, it is going to be 1.3 or 37.2. But Y and W क्या था? ये I do not recall now. So I'll leave it for now. Mark for review next. Mark the incorrect option with respect to nitrifying bacteria. Incorrect कौन है? तो नाइट्रीफाइंग में तुम्हारा स्यूडोमोनास नहीं होता है, ठीक है. नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. ओके. फॉस्फेट साइनोफाइशियन पॉलीसोम नहीं होता है, ठीक है. कोलोनियल एल्गी among the following is colonial algae, filamentous cololian, Eulothrix, Volvox. So the answer should be, I think Eulothrix was, one is filamentous, one is colonial from these. I'll go with Volvox. I am getting an intuition कि Eulothrix filamentous था, ठीक है. If a colorblind woman marries a normal visioned man, then their sons would be, okay. So the person, the man is normal. So XY, normal man, and woman is colorblind. Colorblind means she is affected on both of her X, and then the sons would be. So we can see we'll be having XY and XY and XX and XX. So all the sons are going to be affected क्योंकि उनमें Y जो है वो obviously compensate नहीं कर सकता affected X के लिए, तो all color blind. Okay, and this is a type of crisscross inheritance. तो mother is affected तो son तो होगा ही affected, ठीक है. mother carrier भी होगी तो son affected होगा, लेकिन 50% होगा वहाँ, but यहाँ पे 100% होगा क्योंकि mother is affected actually on both of her genes. Cyanobacteria is found in association with coralloid roots of cycas. As far as I recall, this was coralloid roots of cycas. Mycorrhiza नहीं है, तो A और C में से एक होना चाहिए, but Pinus से Cyanobacteria, Pinus में coralloid roots नहीं था ना, coralloid root नहीं था, तो ये होना चाहिए आंसर. Select the incorrect statement. The first word in a biological name represents a genus, while the second component denotes a specific epithet. सही है. Biological names are generally in the Latin language. Both the words in biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in Latin. Okay, this is also correct. The first one represents genus. Second, specific epithet. Latin. No, Latin. It's not Latin actually. Cyclic photophosphorylation resistance formation of, इसमें NADPH नहीं बनता क्योंकि NADPH reductase नहीं होता, सिर्फ ATP बन पाएगा. Ribulose diphosphate carboxylase enzyme. Okay. Rubisco, this is talking about Rubisco. This is the common name. Bisphosphate carboxylase oxygenase बोलते हैं generally हम लोग. Catalyzes carboxylation reaction between Rubisco जो है convert करवाता है RUBP plus CO2. Ribulose biphosphate को CO2 के साथ मिला के it gives you a product जो कि होता है तुम्हारा 3 कार्बन का phosphoglyceraldehyde. Okay, so this should be the, okay, this is the product, sorry. Ribulose 1,5 diphosphate होना चाहिए, ये होना चाहिए आंसर. Individual has overall masculine development, gynecomastia is sterile. So this is a case of XXY, ठीक है. gynecomastia होगा due to एक extra X, ठीक है. तो ये होता है आपका Klinefelter syndrome. Moving on, the number of genes on chromosome 1 is, most number of genes 2968. Okay. Okay, absence of enzyme. Name the enzyme. कौन सा enzyme है जो ये reaction करवा रहा है? कुछ नहीं है. This is just a typical NCERT line को copy करके दिया हुआ question. Carbonic anhydrase ये
ये करवाता है आपका रिएक्शन, ये वाला। द नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मैच्योर एम्ब्रायो सैक इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, माइटोटिक जनरेशन कितना होता है? थ्री, थ्री का जरूरत पड़ता है एज फार एज आई कैन रिकॉल, क्योंकि एक न्यूक्लियस होता है एंड वो पहले दो में डिवाइड करता है माइटोटिकली, एंड फिर वो पोल्स पे जाता है एंड वहां पे फिर वो तो ये एक रिएक्शन हुआ, सॉरी चार होगा क्या, नहीं पोल्स पे गया, सॉरी एक हुआ, ये आठ बनता है एक्चुअली, तो आठ बना लेते हैं बस। ये दो में कन्वर्ट हुआ, चार, आठ, ठीक है। तो दिस इज थ्री, सही है। The ratio of the speed of electron is in first Bohr orbit of hydrogen atom, तो लाइट, ओके, लाइट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो काफी कम आएगा रेशियो। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है लाइट से कभी ज्यादा हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन 1 and 3 वुड गो आउट ऑफ आवर कंसिडरेशन। अब हम रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, तो या तो बी होगा या डी होगा, विल सी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके। कैसे निकाल सकते हैं हम? ये तो फॉर्मूला 2.16 इंटू 10⁻⁶ इंटू एज वी गो फार, तो स्पीड जो होगा वो घटते जाएगा, ठीक है। तो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जेड वन होगा और एन भी वन लेंगे, तो ये 2.16 इंटू 10⁻⁶ आ गया। एंड इसका हमको रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ लाइट से, 3 इंटू 10⁸, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 10⁻⁻2 ऊपर में, एंड दिस वुड बी समथिंग ऑन द लाइंस आपका 0.73 के आसपास, ठीक है। तो 0.73 इंटू 10⁻⁻2, दैट वुड बी दिस number of moles of KMnO4. Okay, so this is chemistry, starts here. Now the number of moles of KMnO4 that will be needed to react will be going to physics first. Okay, physics is better for me. So starting with physics. A body of mass m moving with velocity v suddenly breaks into two pieces. Okay, mass m moving with velocity v suddenly breaks into two pieces. एक पार्ट जो है स्टेशनरी रह गया, दिस इज अ पार्ट m/4, ये इसका स्पीड जो है 0 रह गया, और दूसरा पार्ट जो है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ, दूसरे पार्ट का मास लिख लेते हैं 3m/4 एंड मान लेते हैं इसका जो स्पीड है वो v डैश है। दिस इज अ केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो इनिशियली मोमेंटम जो है p initial is equal to p final, विल राइट इनिशियली mv is equal to फाइनली m/4 इंटू 0 ही हो जाएगा, प्लस 3m/4 into v dash. Okay, so m would go, v dash would be 4v/3. This is the answer if there is any option. A particle moves in a circle of a radius 0.5 meter, okay, at a uniform that at a speed that uniformly increases 0.5 meter the radius. Find the angular acceleration of the particle if its speed changes from 2 to 4 in 4 seconds. Okay, so we'll find the tangential. We have the tangential velocities that are 2 and 4. Okay, 2 से 4 it has changed. So we'll have the tangential acceleration that is 4 minus 2 by 4. That is 1/2. ठीक है, तो alpha, that is angular acceleration, it is equal to tangential acceleration by radius. तो 1/2 by radius मतलब नीचे में 0.5 एक और आ जाएगा, सॉरी 1/1, that is 1.